I will share the screen. One of the important drug, that is the amoxicillin, we are going to study today. Do you know the amoxicillins? Have you heard the name amoxicillin? आप में से किसी ने amoxicillin का नाम कभी सुना है? ओके, amoxicillin जनरली जो है, it is a important class of the antibiotics. Okay, so what is the antibiotic? Do you know? Some part of the antibiotic we have studied in earlier lecture. Okay, antibiotics are the compounds which create the antibodies in the body to develop the body for the resistance against the any infection, any virus, viral infections, or prepare the body for the future to perform the healthy functions. तो इस तरह से एंटीबॉडी बॉडी में जो लिए जाते हैं, ओके, दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर द बॉडी, ओके, to perform the functions against the viruses, bacterial infections, and number of diseases. So there are the number of generations, okay, first generation, second generation, third generations of the antibiotics. And what are the important use of antibiotics? They are generally the effective against the protozoals and the fungal infection also. Okay. Many antibiotics have the tumor inhibiting property also. It means carcinogen static, stop the carcinogens. Some of the antibiotics are useful in the study of the biochemical cellular mechanism also. Okay. Some antibiotics are used in agriculture to produce the mutations in the molds. So there are the number of applications. They are also used as supplements for the preservative for poultry farms, okay, for the fresh seafoods. For that purpose we use the antibiotics. So antibiotics are the various types, okay, various class are there, and which are used for the develop the resistance in the body. There are a number of bacteria, okay, gram negative bacteria, gram positive bacteria. So against that bacteria, okay, these antibiotics or drugs are generally used. So antibiotic drugs are against both types of the bacteria, that is gram positive bacteria and the gram negative bacteria. There are the number of categories of bacteria also. Okay, leprosy-bacterium, okay, streptococcal bacterium, TB. In the TB also there are the bacterial diseases. Okay, leprosy is also bacterial diseases. So in these cases, gram negative bacteria is also there. Okay, so in these cases, antibiotic drugs are used. Generally, the main categories of the antibiotic drugs are the penicillin, okay, erythromycin, lincomycin. These are the and streptomycin is also one of the important drug. Neomycin, gentamicin. Gentamicin generally used for the eye infections. Okay, these are the number of categories. In that categories, okay, some of the broad spectrum antibiotics, some of the narrow spectrum antibiotics. Okay, so there are the number of types of antibiotics. In that we are going to today we are going to study the amoxicillins. The structure is also given here. Screen visible है ना? Yes, sir. हाँ.
So structure is given here. It is a complicated structure. Okay, it is a complicated structure for the amoxicillin drugs. Okay, so these structures having the number of rings, having the heteroatom also nitrogen, oxygens, sulfur is also in the amoxicillin structures. Okay, and the amoxicillin structures are available. Amoxicillin are available in the capsule form. Okay, mean for the medicinal use, it is available in the capsule form also, and it is a semi-synthetic types of the penicillin introduced. Okay, and it is introduced in the market in the 1974. Okay, having the hydroxyl groups. Okay, amino groups. Okay, benzyl groups. So these are the types of the one of the types of the penicillin also. So amoxicillin having the white colors, okay, white crystalline powder, and it is soluble in the water and available in the oral dosage form. It is not generally available for the and intravenous, okay, IV form. It is only available for the oral forms, and it having the good antibacterial activity and oral absorption is better compared to other dosage form. The best dosage form is the oral dosage form. So having the broadly against the antibacterial properties, okay, and amoxicillin is used in the treatment of certain types of the, okay, urinary tract infections. It is also used in the treatment of the meningitis and the respiratory tract infections. Okay, it is less effective in the treatment of the dysentery because of its greater gastrointestinal properties. So each drug having the effects as well as at the same time it having the side effects also. Okay, so it may cause sometimes the diarrhea, sometimes it may cause the allergic reactions. Okay, sometimes it may cause the breathing problems, swelling of the face. So each and every drugs having the effects as well as the side effects. Side effects are the minor in laser conditions. Okay, so this is the structure of the amoxicillin. So amoxicillin is the very important class of the antibiotics. Okay, the structure is there. Okay, along with the dosage form is there. It is available in 250 milligram. Okay, the number of brands is available online which sell the amoxicillin drugs by various brands names. Number of manufacturing companies are there, okay, which manufacture the amoxicillins. Lot of tremendous amounts of requirements for the amoxicillin in the healthcare sectors. So these are the things regarding the amoxicillins. Okay, so we have the some questions also there about the amoxicillin. That is a write a note on the amoxicillin and give its side its uses and side effects. So amoxicillin is a semi-synthetic penicillin introduced in the 1974, and it is a para-hydroxy alpha amino analog of the benzyl penicillin. Amoxicillin is a white or the off-white crystalline powder sparingly soluble in water, and it is available in oral dosage form. It has a good antibacterial activity and oral absorption is better. Amoxicillin is used in the treatment of a certain systemic or urinary tract infections. Uses are there. Okay. Side effect: diarrhea, allergic conditions. Next point is the route of excretion of the drugs. Okay. These two routes I mentioned here, that is the renal excretion and the skin excretions. These are the two routes. Okay. Renal excretion and the skin excretions. तो जनरली एक्सक्रीशन के प्रोसेस में बॉडी से बाहर जो जाता है मटेरियल, ओके, वो मटेरियल अनवांटेड मटेरियल होता है बॉडी का. एक्सक्रीशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट जनरली जो है बॉडी से बाहर जो फेंकने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन. तो बॉडी के अंदर सेलुलर प्रोसेस के अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर और बॉडी के अंदर जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है
वो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर फेंकने का काम एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू होता है. So this is a vital important one of the important process of the body because waste management अगर जो बॉडी का नहीं रहा तो बॉडी क्या होंगे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होगा वेस्ट मटेरियल का, उसकी वजह से डिसीजेस होंगे. ओके okay? आपको पता है किसी को अगर किडनी फेलियर का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गया तो उसको कितना प्रॉब्लम जाता है. ओके okay? यानी बॉडी जो है वेस्ट मटेरियल जैसा हमारे कूड़ेदान है घर में, अगर जो रखेंगे तो चीजें सड़ेंगी तो हम लोग उसको तुरंत फेंकते हैं. तो एक्सक्रीशन का सिस्टम जो है बॉडी के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है. ओके, बॉडी डिज़ाइन में एक्सक्रीशन को एकदम ज़्यादा वैल्यू दिया गया है. तो एक्सक्रीशन ऑर्गन सबसे ज़्यादा है रीनल एक्सक्रीशन एंड द स्किन एक्सक्रीशन. दीज आर द मोस्ट कॉमनली. ओके, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एक्सक्रीशन इज हैपन इन दिस टू categories. Okay, so there are another also there excretion, that is the biliary excretion is also there. Okay, through the lungs is also excretions. Okay, through the intestines. Okay, so these are the different routes of the excretions. Through the milk is also excretion is through the body is there. Okay, so these are the important. In that, two are the most important, that is the renal excretion and the screen excretions. So for the renal excretion which organ is responsible, किसी को पता है renal excretion के लिए बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है रिस्पॉन्सिबल है? हेलो, किडनी बोलिए. किडनी किडनी Kidney, right. So kidney is the most important vital organ of the body which is responsible for the excretions. So किडनी की अगर जो स्टडी में आप जाएंगे, किडनी की स्टडी को अगर जो आप देखेंगे, ओके, तो किडनी का जो फंक्शन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है. ओके, किडनी जो है बनी हुई है माइन्यूट माइन्यूट जो है फिल्टर से. जैसा कि हम सिंपल अगर जो फिल्टर देख लेंगे, कोई सिंपल फिल्टर किसी के वहाँ वाटर प्लांट होगा घर पे, ओके, या फिर स्मॉल वाटर फिल्टर होगा तो उसके अंदर आपने देखेंगे कैंडल्स होते हैं अलग अलग तरह के. ओके, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, कार्बन फिल्टर होता है उसके अंदर, सिंपल कॉटन के फिल्टर होते हैं, रोटेटिंग फिल्टर होते हैं, तो उसके डायफ्राग्राम होता है. इस तरह से नंबर ऑफ चीजें होती हैं सिंपल अगर जो आप कोई फिल्टर देखेंगे घर के अंदर का. ओके, जो क्या करता है सिर्फ वाटर जो है जिसकी जिसके अंदर सॉल्ट का क्वांटिटी या भी मिनरल्स की क्वांटिटी, ओके, सॉल्ट वगैरह जो रहते हैं ज़्यादा रहते हैं, हार्डनेस ज़्यादा रहता है, उसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है. तो इतने सारे मेम्ब्रेन हैं, इतने सारे चीज़ें हैं. अब एक किडनी है, किडनी तो क्या करती है, पूरा वेस्ट मटेरियल, पूरा वेस्ट मटेरियल जो उसके पास आ रहा है वो वेस्ट मटेरियल में से, यानी उसके पास आ रहा है ब्लड, ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल उसको सेपरेट करने का काम कर रही है. वाइटल, बहुत ज्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है. तो इसके पास इसको सपोर्टिंग जो है इसके, ओके, वहां पर क्या रहते हैं, स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स रहते हैं, दैट इज रीनल ट्यूब्स. ओके, रीनल ट्यूब्स के अंदर फिर एल्वियोलाई रहते हैं. ओके, ओके, बोमान कैप्सूल्स रहते हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर हमने इससे पहले अर्लियर क्लासेस में हमने देखा होगा. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी फॉर द एक्सक्रीशंस. ड्रग का भी इसमें पढ़ रहे हैं हम, इसलिए ड्रग की वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं कि तो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग जो प्रोसेस है, ओके, वो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग में ये जो ही रीनल एक्सक्रीशन इम्पोर्टेंट है कि तो अगर जो कोई ड्रग है उसका नुकसान है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहीं पर होने वाला है. ओके, तो कोई भी प्रोसेस, ओके, ड्रग का जो भी रहेगा सब बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, ओके, जैसा कि एक्टिव मेटाबोलाइट्स है, ओके, विच एग्जिबिट द डिजायर्ड फिजियोलॉजिकल और द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स. ओके, और आफ्टर परफॉर्मिंग द फंक्शंस जो भी ओरिजिनल फॉर्म में है मेटाबोलाइट्स जो है उसको क्या होना होता है, लास्ट में एक्सक्रीट होना होता है. तो दिस दिस ड्रग्स, ओके,
और इट्स फ्रेगमेंट्स इन द बॉडी जो कि प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक अगर जब बॉडी में रहेंगे तो क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, अनडिजायर्ड साइड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो दिस बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, में जो प्रोडक्ट मिला है, एक्टिव मिला, मेटाबोलाइट्स जो वेस्ट मिला है, ओके, तो इसको बॉडी के बाहर डालना बहुत जरूरी है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो ड्रग और मेटाबोलाइट्स विच बी मोर पोलर देन द पेरेंट ड्रग्स and hence they can be easily excreted by the kidney efficiently. So thus the lipid soluble drugs persist in the system and they are eliminated only after they converted into the polar compounds. तो पोलर नॉन पोलर का भी एक कंसेप्ट है। पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट है। पोलर कंपाउंड्स अगर जो लिए बॉडी के अंदर, लेकिन वो वही फॉर्म में उसको एक्सक्रीट करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो अगर जो उसको एक्सक्रीट करना है तो उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर्स वहाँ पे होता है। ओके, तो थ्रू द रीनल एक्सक्रीशन हम जो है ये सारी चीज़ों को बाहर फेंक सकते हैं। तो ये ड्रग के अंदर इन्वॉल्व क्या होता है फिर रीनल एक्सक्रीशन के अंदर, पैसिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की एक प्रोसेस होती है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन की एक प्रोसेस होती है, पैसिव डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है। किसके अंदर होती है सारे प्रोसेस, ये नेफ्रॉन के अंदर होती है, नेफ्रॉन इन द किडनी। तो फिर किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया फिर, कोई बोल सकता है? नेफ्रॉन। किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फिर नेफ्रॉन हो गया। तो नेफ्रॉन ये सारी चीजें करता है, कौन कौन सी, ट्यूबुलर सिक्रेशन, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें रीनल करता है। उसके बाद दूसरा होता है स्क्रीन सिक्रेशन। स्किन सिक्रेशन के बाद में आपको क्या इफेक्ट दिखता है, जनरली हमारी जो बॉडी का जो सरफेस है, स्किन है, वो बहुत से टाइम में क्या होती है, स्टिकी हो जाती है। कभी कभी ऑयल आता है उसके स्किन पर, कभी थोड़ा सा वाटर के ड्रॉपलेट्स आते हैं। ओके, तो इसके अंदर भी क्या होता है, स्किन को हम प्रॉपरली फिर डेली क्या करते हैं, वॉश करते हैं, हाथों को प्रॉपरली धोते हैं। ओके, बाथ लेते हैं। इसका रीजन यही है कि बॉडी जो है एक्सक्रीट करती है, बॉडी के थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी में आता है, और ये वेस्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं, वॉश आउट कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो स्किन का एक्सक्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ये भी सेलुलर प्रोसेस का वेस्ट वहां से बाहर फेंकता है। तो स्किन क्या भी है, स्किन भी क्या है, एक टाइप की वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन। ओके, and covering the largest area of the body. So cover जो largest area cover करने की वजह से it is the one of the important route for the excretions of the drugs, and important एरिया ज़्यादा होने की वजह से एक्सक्रीशन का एरिया बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली बॉडी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। ओके, और फॉरिन बॉडीज थ्रू द पोर्स, स्किन अलोंग विद द स्वेट वो जो भी बाहर निकल जाते हैं। ओके, एंड द अमोनियम एंड द सोडियम सॉल्ट, जैसा कि सॉल्ट हम जनरली देखते हैं स्किन खारी हो जाती है, यानी क्या होता है, सॉल्ट उसमें जनरली बाहर गिरते हैं, अमोनियम का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, यूरिया, मेटाबोलाइट्स, द आर्सेनिक एंड लीड आर एक्सक्रीटेड थ्रू दिस स्किन। तो स्किन से एक्सक्रीट होने वाली चीज़ें जनरली सॉल्ट होते हैं, यूरिया भी आता है, मेटाबोलाइट्स भी आ सकते हैं, आर्सेनिक भी आ सकता है, लीड आ सकता है। दीज आर द मटेरियल्स एक्सक्रीटेड थ्रू द क्या है, स्किन। तो ये पार्ट हमने आज यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है।